खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति सभी बच्चों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। शिविका बहन बस जोड़ रहे हैं, 2 मिनट हम वेट करेंगे उनके लिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज हमारे यहाँ का क्या है, इंटरनेट डाउन हो गया था, तो अभी मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये है
तभी तब तक अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिविका में आप जुड़ गए हैं क्या? हो जाइए ना, अब इतना टाइम लगता Hello, Om Shanti. Good evening, everyone. Is my voice audible? Yes, Didi. How is everyone? Hi, hello, Ariman. Hi. Hello, Veer. Hello, Shlok. Hi, Adwaita. Hello, Manju. Is this Manju? What's your name? Write your name. Don't write your mother's name. Okay, just write your name. Rename yourself. Om Shanti. Hello, Yutika. Are you sitting in a dungeon? Why are you so black? I am not able to see you properly. Oh, दीदी एक्चुअली लाइट पीछे थोड़ा सही से नहीं आ रहा है। वो वो आपकी लाइट थोड़ा नहीं आ रही है, black हमारा हो रहा है। इंटरनेट नहीं आ रहा है। ओके, ओम शांति। हेलो अग्रिमा। अच्छा, तो आज हम लोग पता है क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हम लोग 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं ना आप सभी से। हाँ, 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं ना। So what are we going to do today? Any guesses? Any guesses? कौन बताएगा? What are we going to do today? आज हमारे साथ कौन आ रहे क्लास कराने के लिए? No guesses, no guesses. कौन कौन क्या? चार्ली चार्ल्स हॉग। अच्छा, आप में से कौन जानता है चार्ल्स हॉग भाई को? किसने देखा है उन्हें? ओके, वीर ने देखा है। वीर, ओनली वीर इज रेजिंग हिज हैंड, नो वन एल्स। Who else has seen him? He's a very senior brother. He's a very senior brother and he stays in Australia. So he has come all the way from Australia to India. And he conducts lot of classes. He's conducting all the programs in Australia, New Zealand. So he's the in charge of everything there. So
So he's a very senior brother, very experienced brother. So I told him, मैंने उनको बोला कि आज आप क्या होगा 6:30 हम स्टार्ट करेंगे. चार्ली भाई हमारे साथ 6:30 जुड़ने वाले हैं. ठीक है, then we'll start. But before that, what are we going to do? We are going to play a game. ठीक है, let's play a game, an online game. Okay. Okay, so all of you are ready? Are all of you ready? Yes. Ready to play the game? तो मैं शेयर करूं आप सबके साथ गेम? हाँ, शेयर करूं? ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ. Just wait. Okay, let me share. Wait. Okay, so what you have to do, आपको क्या करना है? इस गेम में लिखा है guess the word. आपको क्या वर्ड गेस करना है? कैसे वर्ड गेस करना है? आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगे, उसमें कुछ चीज कॉमन होगी, तो वो सारी पिक्चर्स मिलके क्या एक वर्ड बता रही है, आपको वो वर्ड गेस करना है. ठीक है, जो उस पिक्चर से लिंक्ड है. आप सभी ना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो भी होगा. Wait. Okay, so let me share again. Okay. Okay. So here you are seeing 4 pictures here. So these pictures, ये क्या, कौन सा 3-letter word है? The clue is it's a 3-letter word जो ये सारी pictures हमें बता रही है. मैं अपनी स्क्रीन शेयर की हूँ. हाँ, स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर नहीं हुई है. वेट कीजिए. Are you able to see my screen? Yes. आपको chat box में लिखना है. Okay. Yes, most of you, हाँ बिल्कुल सही guess किया. Yes, you all are right. It's hot. Okay. ठीक है, next देखते हैं. अब ये पिक्चर्स क्या बता रही हैं? It's a 5-letter word. 5 letters का word है. या चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में. वेरी स्मार्ट, सभी बड़े स्मार्ट है. राइट. कौन सा वाला राइट? WRITE. यस. कुछ लोग लिख रहे हैं जवाब दिया प्रजना फ्रॉम यूके. वेरी नाइस प्रजना. ओके, योर आंसर इज करेक्ट. इट इज राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इट्स अ 5-letter word. हाँ, सबसे पहले प्रजना ने ही जवाब दिया अभी भी फिर से. Yes, you all are correct. It's clean.
यस, अनय तो डबल कोट्स में जवाब दे रहे हैं। करेक्ट, इट इज क्लीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सबसे पहले अथर्व ने सही जवाब दिया है। नो, इट्स नॉट प्रे। व्हाट इज इट? Respect. यस, लिखो लिखो लिखो। यस, इट इज रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, फोटोज करेक्ट। चेक करो क्या है वो, जैसे रिस्पेक्ट किससे वर्ड होता है? किससे मालूम पड़ता है रेस्पेक्ट? कौन बोल रहा था? दीदी, आई एम सेकंड। गायत्री कह रही है आई एम सेकंड। ओके, यू आर सेकंड। ओके, नेक्स्ट। अब ये सबसे ज्यादा टफ है, देखते हैं ये कौन बताता है। ये बताओ, ये हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। अरे, आप तो सब जीनियस बच्चे हो, मुझे लग रहा है। यस, आप तो सब जीनियस बच्चे हो। आप लोगों से तो कुछ भी नहीं हम खेल सकते। यस, यू ऑल आर राइट, इट्स रेज। आई एम थर्ड, सिया कहती है आई एम थर्ड। यस, इट इज रेज। अच्छा, चलो, अब ये तो गेम हमने खेल लिया। अब हम एक दूसरा गेम आपके साथ खेलते हैं। देखते हैं कि अभी। ओके, आपको ये जो वर्ड बिखरा हुआ है, ये जो वर्ड है, ये बिखरा हुआ है। इस बिखरे हुए वर्ड से आपको 10 वर्ड्स बनाने हैं। 10 वर्ड्स बनाने हैं। एक ऐसे नहीं लिखो, एक एक करके नहीं लिखो। आप पहले 10 वर्ड्स अपने चैट में लिखो और एक एक वो 10 वर्ड्स को एक साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। पहले 10 वर्ड्स एक साथ लिखो अपने चैट में कि वो कौन कौन से हैं, और फिर उनको फिर एंटर प्रेस करके शेयर करो। जरूरी नहीं है आप 10 बनाओ, आप जितने बना सकते हो, केवल यही वाले लेटर्स आपको यूज करने हैं। TIRGH, आपको केवल यही वाले लेटर्स यूज करने हैं, दूसरे कोई लेटर्स यूज नहीं करने हैं। और आपको ये लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे टाइट आप नहीं बना सकते, क्योंकि टाइट में 2 बार टी आता है। टाइट आप नहीं बना सकते, लाइट नहीं बना सकते, इसमें एल नहीं है कहीं भी। ट्राई भी नहीं है, वाई नहीं है इसके अंदर। जो लेटर्स आपको दिए हैं, उन्हीं लेटर्स को ऊपर नीचे करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मेक 10 वर्ड्स। आप जितने बना सकते हो इससे उतने वर्ड्स बनाओ। देखो, अनय ने कितने अच्छे वर्ड्स बनाए हैं। 7 वर्ड्स अनय ने बना लिए। नाइस वर्क अनय।
वेरी गुड। इसमें दिमाग घूमता है ना कितना। ओके, राइट, हिट इट, गिर, हाई, हाई, हाई। वेरी गुड। गिट, हिट, राइट, हाई, हाई, इट। गायत्री ने भी अच्छा बनाया है। ओके, तो आप समझ गए। तो अभी मैं आपको दूसरा वर्ड दूं। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड। ये नेक्स्ट वर्ड है इसमें तो मुझे लगता है 10 से ज्यादा बन जाएंगे, 10 से ज्यादा वर्ड्स बनेंगे। देखते हैं कौन करेक्ट 10 से भी ज्यादा वर्ड्स बना पाता है इसमें। बेटा एक एक वर्ड नहीं डालो, एक एक वर्ड डालोगे तो आपका नंबर नहीं बनता है। आप एक साथ लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। 10 भी अगर एक साथ बना करके एंटर करोगे तो 10 वर्ड्स दिखाई देंगे चैट बॉक्स में आपके। पहले अपने चैट बॉक्स में वो वर्ड्स बन लिखो। ईट, नेट, गन, स्टार। सिया ने 4 वर्ड्स बनाए हैं। और ये जो पूरा वर्ड है ना, ये पूरा वर्ड देखते हैं कौन गेस कर पाता है कि ये फुल वर्ड कौन सा है। ये सारे लेटर से एक वर्ड बनता है। वो वर्ड देखते हैं कौन आप में से गेस कर पाता है। देखो वीर ने कितने सारे वर्ड्स बनाए हैं। स्टार, ईट, गन, नेट, ईस्ट, नट्स, सी, ईयर, रैट, सन। ये तो 3 या 4 लेटर्स है। इससे ज्यादा बड़ा बनाओ। गैंगस्टर। गैंगस्टर में 2 बार जी आता है, इसमें तो सिंगल जी है। यस, एंजल ने गेस कर लिया। सी, एंजल। एंजल ने गेस कर लिया सिग्नेचर। यस, सबसे पहले एंजल ने गेस किया सिग्नेचर। वेरी नाइस, वेल डन एंजल अंदानी। एंजल ने गेस किया। कंग्रेचुलेशंस। ओके, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स निकाले हैं। अर्जेंट, यस। गिटार, देखो कितने वर्ड्स निकाले। प्रजना ने कितने सारे वर्ड्स निकाले हैं। अर्जेंट, एंजल, ट्रेन, सिट, सैट, ईस्ट, गिटार, स्ट्रंग, स्टंग। वेरी नाइस, लवली। ओके, अभी क्या करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं चार्ली भाई थोड़ी देर में। तब तक हम क्या करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग और भी गेम्स खेलेंगे आपके साथ।
दारिका आपकी सिस्टर है एंजल, आप ही एंजल हो? वो दोनों सिस्टर्स है। Yeah, she's my sister. योर सिस्टर। Yes. आप अलग अलग अपने अपने रूम से जुड़े हुए हो? No, I'm in the hall. She's in the bedroom. हाँ, Oh, okay. That's lovely. Okay, so is anyone having any question to ask? So how many of you practice meditation? Does anyone of you practice meditation? Or just no, Didi, I just study, I do not have time to meditate. How many of you practice meditation? Okay. Honestly, tell me honestly. Very less. I'm seeing only few hands are being raised. हाँ जी, मैं इसको बताइए। Why? Why, Pari? Tanish? Don't you meditate? How many of you like meditation or know the real method to meditate? How? Okay, first lower your hand. Okay, how many of you like meditation? Tell me that. Huh? Only those kids who like meditation, who love to meditate, only those kids should raise hand. Okay. So how many of you know the real method of meditation? All of you know. All of you know method of meditation? सबको पता है कैसे योग करना है? अभी आप लोग देखो कहाँ बैठे हो? श्लोक, आप कहाँ पे बैठे हो? आप भारत के कौन से पार्ट में बैठे हो? Where are you sitting, Shloka? I'm asking you. See, Darika is an angel are sitting in UAE. You are sitting in UAE. Aryaman, आप कहाँ बैठे हो? In which part of the world you are sitting? आप दुनिया के कौन से कोने में बैठे हो? मैम इंडिया। इंडिया में कहाँ पर हो? मैम पुणे। आप पुणे में बैठे हो। सिया, आप कहाँ बैठे हो? आप नहीं कर पाओगे, मतलब एक मिनट भाई। दिल्ली, न्यू दिल्ली। आप दिल्ली में बैठे हो। और इशू आप कहाँ बैठे हो? गाजियाबाद। सर हरियाणा। आप हरियाणा में बैठे हो। वेरी नाइस। शिवांशी, आप कहाँ बैठे हो? शिविका बहन। हाँ जी, चार्ली भाई जी जुड़ गए हैं। ओके, वेरी नाइस। ओके, शिवांशी आप कहाँ बैठे हो? जयपुर, राजस्थान। जयपुर में बैठे हो। देखो, आप सब पूरे दुनिया में अलग अलग कोने में बैठे हो। इंडिया के भी अलग अलग कोने में आप सभी बैठे हो, लेकिन हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं ना यहाँ पर। इस मोमेंट में हम वी ऑल आर टुगेदर। इज इट? You all are listening my voice. We all are connecting. We all are connected now. I am able to reach you. You are able to reach me. We all can talk. Huh? So this is what? This is what? इसको हम क्या कहेंगे? तिथि, इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अद्विता ने कहा। Yes, Advita. What would you call this? Connection. Yes, it's a beautiful connection that we all are sitting here together and communicating with each other. Right? And see who's with us now? It's Charlie Bhai. Hello, Charlie Bhai. Om Shanti. You'll have to unmute yourself. Sorry. Hello, Shivika Ben. How are you? Yeah, we all are good. How are you? I'm really well, thank you. Lovely to be with you. Yeah, it is so nice to see you after such a long time.
Yes, I arrived in Thank India you. about a week ago. Thank you for taking time and joining with us today. My pleasure. My pleasure. Yeah, it's a beautiful class of so many flowers. Baba's flowers, Baba's angels. We all are together today, and we join every Saturday. Every Saturday we join, and there are a lot of these little stars who are connected with us from a very long time now. And we have invited Charlie Bhai now. So I was introducing you to these kids. Charlie Bhai is a very senior brother of our institution who is in charge of the whole Australia and New Zealand centers. And he is taking care of a lot of services there. He conducts classes and a lot of programs, and a very spiritual and a very experienced brother, very experienced soul. And you yourself can feel the aura of Charlie Bhai coming, the vibrations of a powerful soul. All these kids are able to feel the vibrations. We all are able to feel. So this is all part of meditation. This is all, the effect of meditation, that the connection is so beautiful that we learn and we grasp so many things and we become powerful. So today's session is all about bouncing back. Bouncing back means that you become so powerful from inside that even if there are problems, even if you have got failures, then also you have the strength to, bounce back and be powerful again and make your efforts again. So Charlie Bhai is going to tell you that even if you face failures, even if you, you don't have the strength, how you can raise your self-esteem. So I think a lot of kids are having this problem कि मैं तो हार जाता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी में ताकत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है ना? तो इसीलिए चार्ली भाई आज हमको गाइड करेंगे उसके लिए कि how you can become resilient and gain the confidence inside to stand again, fight and move on. Okay. So Hindi translation is available for this class. Those who want to listen to this class in English, you can just carry on. But otherwise, if you're not able to understand English much, then you can choose Hindi, click on interpretation and choose Hindi. All right. So let's go for it. Thank you. Bye. So thank you so much, Shivika Ben. It's so lovely to be with you. And really, I feel so happy to meet all of you on this webinar. And I'm actually based in Australia, as you heard. And Australia is the land of kangaroos and koalas. And when I come to India, I'm sorry that the lights here are flashing a little bit. I'll just turn off a few lights. Do you mind? I'll just be quick. दीदी आप तब तक इंटरप्रिटेशन ऑन कर दीजिएगा, आपके नीचे में ऑप्शन आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप स्टार्ट कर दीजिए हिंदी में. I'm sorry about that, everyone, but I'm in Sheshiben's office in Pandav Bhavan, and the lights were not working so well. When I come to India, I often mention that Australia physically is 1.5 times the size of India, but it only has 2 to 3% of the population. So, India is such a huge population. And Australia is a country where people from every country of the world live. And Baba has 4 retreat centers in Australia, where every weekend we run retreats, and we have about 40 centers. And we get people from Europe,
America, South America, Africa, Asia, everywhere. But now the biggest population moving to Australia is from India. It always used to be from Britain, England, but now it's from India. And just to let you know that what I would really love to do is just share a few thoughts with you about bouncing back. It's a great subject. And then if you would like to ask some questions, please feel free. You know, I grew up in Melbourne and I went to school there. I actually went to university in Melbourne, but I was always a searcher. And when I was about 20 years old, I traveled the world for a couple of years. And often I see that as my education. And I went to Southeast Asia, India, the Middle East, Europe, Africa. And I lived with Muslims and Christians and Buddhists and Sikhs and Taoists, which is a Chinese religion, Hindus, of course. And it was a wonderful education. I settled in London. And I was living in London and working in London. And that's where I went to a program with Sister Jenti and Daddy Janki. And as soon as I saw them both, I felt they were familiar to me. And so I started, and I was in London for about 1.5 years. And then I moved back to Australia, and I've been based in Australia ever since. You know, I think as Shivika Ben was saying, life today means challenges. Life today means problems. Life today means difficulties. It's a part of life today. And sometimes we have them in the family. Sometimes we have them at school. Sometimes we have them with our friends. But sometimes also we have them in ourselves. We have problems. Sometimes we feel there's a lot of self-doubt or lack of self-confidence internally. And I would say this is very normal today. You know, life means problems. But there's really 2 ways we can respond to problems. The first is we get very emotional. We can get very upset. We can get very disturbed, and we can think a lot. We can think a lot about someone who doesn't like me, someone who rejects me. I can have fear. I'm just looking at the messages. Is the translation not working, or you can't hear me? No, it's okay. We can hear. It's okay. Okay, thank you. So we think a lot about problems, or the second response is to be knowledgeful. And really, in this life, being knowledgeful means to bounce back. Because actually, Baba has given us so much wisdom to deal with every problem which comes our way. And let's say, you know, one of my friends is negative to me. One of my friends is cruel to me. One of my friends is nasty to me. And sometimes when that happens, we get very emotional. We feel rejected. We don't feel loved. And we think so much. But Baba is always offering us a different way, because when I apply knowledge, I just don't know it and believe it, but I apply it to life. It's like a power where I can bounce back. So sometimes when I look at my friend, rather than taking sorrow from my friend and feeling hurt, I see them as a soul. And I begin to realize that they're under the influence of their own nature, their own sanskaras. And I realize also that if I have negative thoughts of them, who suffers? I do. When I create negative thoughts, my whole state of mind goes down. And this is why really, what's the seed of bouncing back? I would say the seed of bouncing back
is to rebuild my self-respect. And in one way, you know, once Baba said that another way of describing soul consciousness is to rebuild my self-respect. And the first time I met Baba, I was just 22 years old, and it was in Pandav Bhavan, and I met Baba in the history hall. And the Baba spoke the Moli. There was probably 40 or 50 people. And then I was asked to sit in front of Baba. And Baba would always meet with drishti. So Baba gave me long drishti. And I had an experience that Baba's drishti went so deep into the soul. And it's like Baba's drishti scanned the memory track. And his drishti fell on a part of me that had gone to sleep. I would say it's the elevated me, the deity me, the pure me. And it's almost like Baba's drishti massaged that to the surface and introduced me to who I really was. And I can say from that day, my self-respect changed. And I realized Baba saw me up here and I saw myself down there. What is Brahman life really? I think it's stepping into Baba's vision, accepting how Baba sees me, and stepping out of the addiction to a negative vision on myself. And sometimes I think the cycle in the golden age, I'm in the full bloom of self-respect. I feel very comfortable. I'm happy with who I am. When we come to the copper age, I start to look outside. And when the law says whatever I desire will influence me. So if I desire you to love me, when you love me, I'm fine. But when you don't love me, I feel bad. If I desire you to respect me, when you respect me, I feel good. But when you don't, I don't feel good. So what happens is I start to become influenced by everything outside of me. And by the end of the cycle, I would say we become so sensitive, so delicate, so fragile. And this is a sign of real body consciousness. And what I've seen is that there's two things. There's self-confidence and self-respect. And self-confidence, you know, we learn, we get the confidence to study, pass exams, be good at sport, you know, do things and get that. So we have the confidence to do things. It doesn't mean I like who I am. And quite honestly, in this world, sometimes people have so much confidence, you know, to speak in front of people, perform in front of people, do well in their academic studies and so on. But inside, sometimes I don't really like who I am. And this is where I feel that Baba gives us this gift of self-respect, because when I have self-respect, no matter what challenges come my way, problems, I can bounce back quickly. Even sometimes they don't even affect me in the first place. And I feel there's like 4 visions on the soul. We all have 4 visions on us. One is the vision of the world. And people in the world will judge and label you. They will look at you and they will judge you. We all experience that, all of us. Secondly, there's the vision of others. And because people today lack self-respect, they find it very hard to love and respect others. So often we get very critical or negative vision from people around us, sometimes at school, sometimes our friends. The third vision is my vision on myself. You know, this is the biggest influence on my life, because often inside, I'm very negative about myself. I put myself down. I criticize myself. I sometimes tell myself, others won't love me. I'm not good enough. This actually is the biggest obstacle in life. And I would say that the 4th vision is Baba's vision.
And Baba sees me as an elevated soul. And this life is really stepping out of the negative vision on myself and stepping into Baba's vision. And when I step into Baba's vision and I see how Baba sees me as an elevated soul, a special soul, a deity soul. Baba's vision is so elevated. And this whole life is really stepping out of the addiction to a negative vision on myself. And I would say it is like an addiction, because I find that the biggest thing in Brahman life, we know the knowledge, we teach the knowledge, we believe the knowledge, but sometimes I remain attached to this limited and negative vision on myself. And this is really, I would say, the journey of Brahman life. And self-respect is my own evaluation of the inner me. It's not an evaluation of my skills, my talents, my grades at school. No. If you're on your own, if you're by yourself, you have no friends around, no family around, how do you feel about yourself? Do you like yourself? Are you comfortable about yourself? Because often we need to feel good about ourselves. I need to, get praise from people, feel successful, have attainments, and so on. Because really this life is rebuilding my self-respect, and then it's possible to deal with any situation and to bounce back quickly, I would say. And I would say that deep down, we hold on to many beliefs about ourselves. Sometimes we hold on to the belief, I'm not really lovable. People won't love me. People won't like me. People might reject me. So when I hold that belief, even when people show me love, I can't feel it because I'm attached to this belief about myself, or the belief I'm not good enough. Sometimes we do so well. We're so good at what we do. We're perfect. And yet deep inside, the self-doubt is there that it's not good enough. So I put this pressure on myself, or the belief I'm not worthy, I'm not really pure. This is also a very strong belief that many of us carry. And in a way, what is this life? This life is breaking down these old beliefs about myself and stepping into Baba's vision. So the more I have self-respect, I can respect others. The more I have self-respect, I will be humble. I will naturally be humble. The more I have self-respect, I will be loving, and literally everyone will love me. Really, when I have self-respect, people will love and respect me. And when I have self-respect, life is easy. I don't feel, there's not a fear inside, a worry that this might happen, that might happen. Will I do well? Will people like me? What will happen to me if this happens or that happens? Often we carry a lot of internal fears. And I would say that really there's 3 personalities inside all of us. And 2 of them mean that I'm affected by everything. I get disturbed, I worry, I feel afraid. 1 of them helps me bounce back. And once Baba said, children, let go the eye of arrogance and the eye of disheartenment, feeling down, feeling not good enough, feeling up, weak, no enthusiasm, and emerge the eye of soul consciousness. And sometimes it's a little like a battle inside. Which one is more powerful? Which one? The first one I call the eye of arrogance. It's born out of identifying with my body. And I see myself as a whole set of labels, my gender, my age, my nationality, my religion, everything.
When my ego is ruling inside, I compare with others. And I think that I am better, I know more, I am right. But when it comes into my feelings, that's when sometimes I feel so easily insulted, disrespected, not valued, excluded, sensitive. And I would say whenever you're feeling those feelings, know the false I is ruling your inner world. You're being deceived by your ego, which is the child of body consciousness. And so when this I is ruling, everything upsets me, everything affects me. I feel very sensitive. One comment can pierce my heart. I feel so hurt, so upset. I can't even sleep at night sometimes from one comment or one situation. So the first I is the ego, the I of arrogance, the I of superiority. But the second I is really the powerful I. It's the I of inferiority, or the I of lack of self-respect. And when this I is ruling my inner world, this I also takes its identity from my body. When this I is ruling my inner world, I compare with others and I think others are better. Others don't love me. Others don't respect me. Others don't value me. And when my lack of self-respect rules my inner world, that's when I feel hopeless about myself, inadequate, unworthy, not good enough, even a bit depressed. In psychology, depression is a sadness that my dream and life to be loved and valued hasn't happened. But in spirituality, depression is the mourning for the loss of my true identity. I've forgotten really who I am. So when my mind is under the influence of my ego and my lack of self-respect, one day you're up, you feel great, the next day you're down. 1 hour you're up, the next hour you're down. There's a roller coaster of emotion. And when this happens, I feel very sensitive, very delicate, very fragile. What did Baba say? Children, emerge the I of soul consciousness. And really, when I really practice properly to be the soul, then I take back my self-respect. And this is the greatest gift from Baba. And for me, in my life, I had a challenge for myself that if I am criticized, life means sometimes you're criticized. What matters is that I don't lose my self-respect. So I will be criticized, but don't let that criticism make me lose my self-respect. Bounce back quickly. If I fail at something, as Shivika Ben was saying at the beginning, it's life. We all fail. What matters is if that failure makes me lose my self-respect, I start not liking myself. This is the real effect, that no matter what happens, I remain stable in my self-value. And then you will find that no matter what happens in life, I will bounce back quickly. I won't let it affect me deeply. And I would say really that as much as you can, really take this incredible gift of self-respect from Baba and live in your self-respect. Feel the difference between your vision on yourself. Sometimes we're a bit critical, a bit negative of who I am, and feel Baba's vision. How much love Baba has for me. And to me, this is the biggest learning curve of Brahman life, is to step by step back into my self-respect. And then really you'll find life easy. This is my own experience. And just briefly, I will only take a few more minutes and I'd love some chat. That sometimes I think when we start Brahman life, we try to live up to an image. And at first we're people pleasers, What we do, because we don't have self-respect, we try to please other people.
And if they like me, if the family praises me, if my friends praise me, I'm fine. I'm okay. But if they don't, then I feel empty. I feel shattered, disturbed. Because I've lost my self-respect, I'm trying to win it from everything external. And this is when we begin our Brahman life. Sometimes then we try to live up to an image on the surface, like try to live up to the image of what a Brahman should be. But inside there's storms happening. It's normal. It's absolutely normal. And what I've learned in my life is to be gentle with myself, be kind to myself. Don't overreact to yourself. If you make a mistake, if someone criticizes you, don't overreact. Sit and feel Baba's vision on me, and I will feel good. Anyway, I think I should wind up there, and would love to hear from some of you. If you've got any questions or comments or whatever, would really love to hear. So thank you, Shivaka Ben. I don't know whether anyone wants to ask something, whether you type it in the chat box or whether you ask directly. Please feel free. बुरान भाई मेरा ये क्या कहते हैं? दीदी अभी मैंने ऑफ कर दिया इंटरप्रिटेशन. Okay, interpretation is off now. Okay. Anyone want to ask anything? So yes, it's time now to ask questions or your doubts. अगर किसी को कोई doubts हैं, कोई questions हैं, चार्ली भाई हमारे सवालों के जवाब देंगे. देखते हैं कौन किसको क्या question पूछना है. Yes, Pranshi, what is your question? Just raise your hands if you have any question in mind, if you want to ask anything. Khushi want to ask something. Okay, Nabya. खुशी कुछ पूछ रही है. Yes, Khushi. Unmute yourself. Shanti. Yes, Khushi. If someone is for short temper, and if someone like criticize me, if someone bullies me, so like what should I say to Baba? Well, first of all, I think that it's a part of life that sometimes when people lack self-respect, they can't respect others, they're cruel to others, they bully others. And we have, two responses. We can really have a lot of hurt. We can feel very upset by their behavior. Or we can really have the vision of Baba, have mercy for that soul. Because what I find, Khushi Ben, is that people only are cruel to others who don't like themselves. And you can know, even though she or he may be rude to you, nasty to you, saying bad things to you, you know that inside they don't like themselves. Only when they don't like themselves will they be nasty and not liking others. And people watch you. And if your friends watch you reacting to someone who's cruel to you and yet you don't say bad things about them, Khushi, they will trust you. They can see you're a good person. They will really see. And what you've got to do is just try to feel power from Baba, not just faith, but really, really don't let your mind start to think too much. That's not fair. They're being cruel. It's being nasty, because then your happiness goes. But when they're nasty to you, see them as the soul. They're a soul playing their part in this drama. They're under the influence of their own unhappiness, and that's why they're giving unhappiness to others. And try to be uninfluenced or detached, because purity is actually not to be influenced by others. And I would say from my side that the thing that's probably changed most in me
is that I feel less influenced by other people. And that's such a freedom. So just practice when that happens. If they bully you and you see them as the soul, try not to be affected, even have mercy. But if it's too much, you should report it to whoever, your parents or your teacher. You should tell them that this person is not behaving properly. Thank you, Sister Kushi. Thank you, brother. You're from Nepal? Utkarsh also, yes, she is from Nepal. Lovely. I love Nepal. I've been there a few times. That when anyone say bad and harsh languages to me, what will I say to that person? Yeah, that's a really good question. You know what I find? I'm sorry, what was your name? Utkarsh. Okay. You know what I find is that if someone is really harsh to me and I'm harsh back to them, deep down, you don't like yourself. Deep down, you know that's not the right reaction. So you don't have to be weak and just say nothing. You can try to maintain your self-respect and your peace. And you can say to them, please, I don't think that's a nice way of speaking to anybody. So you can express something, but I would never get angry. Anger always causes more problems for you. Okay. So I would really never get angry with them. Now, it's easy to say, but when you practice really, once again, see the soul and just see that they're under the influence of their old nature. They don't have knowledge like you. And so try not to take sorrow from that person. You know what Baba says? Baba says, don't give sorrow. And we make a lot of effort not to hurt the people we love. But sometimes we too easily take sorrow from others. So I would really, not react with anger. And if you feel that's hard, I would not say anything at that time, because the more you get angry, it just creates a habit in yourself. And Because angry creates more problems. Pardon? Yes. Anger creates more problem. This is the punchline that we all should learn. Yeah, it really does create more problems. And, anger has a huge effect on your health as well. Anyway, that's a whole other subject, but you're absolutely right. It creates more problems. If you have self-respect, you won't feel you have to hit back and be angry with that person. So practice, see how you go. Okay, a lot of kids, I guess this is a very common question, but I think the visualization of God, how to experience God in a very early age. I mean, all these kids are less than 15 years old, majority of them. And how to visualize God in such a, small age, to have the experience of God, to the right way of meditation, how to start about it. So if you can just share your experience. Yeah. You know what I would do is that, in Bhakti, we have a belief in God. That is good. Gyan is experiencing God. And can I suggest an experiment that you sit in front of Shiv Baba and visualize Shiv Baba as a radiant jewel of light, emanating light, the ocean of love. And you become just a soul. Sit in front of Baba as a soul and allow yourself to be loved by Baba. Just visualize Baba's light and love entering you, the soul, entering the core of your being, loving you, respecting you, caring for you. Practice that. And if you don't feel that love coming inside of you,
This is where knowledge comes to see what is blocking that love. It's me. It's not Baba. Baba is there. But sometimes I think we just think Baba's a point. So it's just, but Baba's a living, loving being. You can see me on this webcast. I'm a soul, but I'm expressing, I'm speaking, I'm looking, and you're expressing through your body. But Baba's a soul like me, but he does not have sense organs. He does not have a body. But Baba's living, he's real. And therefore, when you sit in front of Baba, visualize the form of Baba, visualize his love like light, energy, vibrations entering the core of your being. And just feel Baba's love. You know, my experience, when I feel love from Baba, I feel completely settled, completely calm, completely peaceful inside. But if I can say, it's like Shiv Baba is on the FM wavelength, you know, the radio. When you are body conscious, it's like you're on the AM wavelength. You can believe in Baba, but you can't really connect to Baba. So if I really want to feel Baba, feel Baba's vibrations, I've got to move up to the FM wavelength. And that really means I've got to be soul conscious. Baba's eternally soul conscious. So can I suggest to experiment with sitting in front of Baba, visualizing Baba's living, aware, he's present, he's real, not just a point of light on a wall, and feeling Baba's vibrations entering you, you know, filling you with that love. I will tell you, the more you feel Baba's love, your self-respect will come back and you will be so resilient to any problems. You'll bounce back so quickly. This is my own experience. Okay, there are a few kids who are waiting for the interpretation of this. So let me just in 2-3 minutes explain what you have told. चाली भाई ने कहा कि जैसे आप अपने सामने कोई भी चीज को, कोई व्यक्ति को, कोई थिंग है, चाहे वो बल्ब जल रहा है या कोई व्यक्ति है, उसको रियल देखते हो ना, कि वो आपके सामने है, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसकी चीज उसको महसूस करते हो, उसी तरीके से आपको परमात्मा को भी महसूस करना है. परमात्मा कौन है, क्या है? शिव है. तो वो पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सितारे की तरह है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक है, उसमें से लाइट निकल रही है, वो बहुत लाइवली है, वो कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, वो कोई नकली चीज नहीं है, वो रियल पॉइंट ऑफ बीइंग है. तो परमात्मा जो है उससे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि हम केवल इंसानों से बात कर सकते हैं. और इंसान कौन से होते हैं? जिनकी 2 आंखें होती हैं, एक नाक है, एक मुख है, 2 कान हैं, हम उन्हीं से बात कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी हम किससे बात करते हैं? हम आत्मा से बात करते हैं ना. तो हम माउथ को यूज करते हैं बात करने के लिए, लेकिन असलियत में बात आत्मा से होती है. तो इसलिए जब हम परमात्मा से बात करते हैं, गॉड से बात करते हैं, तो गॉड से बात करने के लिए हम मन की भाषा का इस्तेमाल करते हैं. तो मन की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हमारा मैसेज पहुंचेगा, ये वाला साउंड ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा. तो इसीलिए जब आप मन से ईश्वर से बात करते हो तो आप पॉइंट ऑफ लाइट से बात कर रहे हो. तो परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है और आप भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हो, और आप अपने मन से उससे बात कर सकते हो और आप महसूस कर सकते हो कि वो आपको जवाब देता है. वो एक रियल है, रियल एंटिटी है ना, कोई आर्टिफिशियल, कोई नकली चीज नहीं है बनाई हुई. तो जैसे आप लाइट महसूस कर रहे हो, आपके पास रोशनी आ रही है, और अगर लाइट ऑफ कर दोगे तो रोशनी चली जाएगी, देयर विल बी डार्कनेस, राइट. इन सिमिलरली यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड. भगवान की प्रेजेंस भी आप महसूस कर सकते हो जब आपके मन में आप देखते हो कि शक्ति आई है, आपके अंदर फेथ डेवलप हुआ है ना, यू फील पावरफुल. तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल इंटरेक्शन है. और आपने देखा कि जैसे आपने बाबा से बात की और बाबा ने उसको रेस्पॉन्ड किया है. धीरे धीरे करके इस एक्सपीरियंस को आप बढ़ाते जाओ, तो उसी का नाम मेडिटेशन है ना. तो इसलिए आपको
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से, सब चीजों से, दूसरे थॉट से, हर चीज से थोड़ी टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा. दिस डिस्कनेक्शन विद द वर्ल्ड एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर. ओके, ठीक है. अनयन, yes. अनयन आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? Okay. Yes. Who else wants to ask? अनयन, Yes. अनयन. Okay, Anayan. Anayan. Yes, Anayan. Om Shanti Charlie bhai, Charlie brother. Yes, go on, Anayan. Yes, so I met you in last year's Diwali in Om Shanti Bhavan. Oh, good. You remember. You've got a good memory, Anayan. Yes, so like sometimes some people say me hurtful things, so I get very demotivated. After hearing your words today, made me very motivated and bounce back of every demotivation and all. That's lovely. Yes. That's so good, Mm. Anayan. And really, that's very courageous of you, because human nature now, we are addicted to being hurt and, you know, being upset. And really, I think if you keep practicing not to give sorrow and not to take sorrow, that's at the heart of really Baba's life. And it makes your life much happier. And really, Kartikesh. if you can give those good wishes to other souls, you know, I find, Anayan, that the way, if your mind is positive, if your mind has loving thoughts for everyone, everyone will love you. That's a beautiful life. Even the nasty people, if you have good thoughts for them, you need strength from Baba, they will even change their attitude to you. And that won't be demotivating. They will change because of your effort, your spiritual power. Just having good thoughts and good feelings for them, you can change them. You think it's possible? Yes. Well done, because that's what Baba loves most. When you can change with the power of your attitude, change others. Well done, that's great. Shanti brother, thank you. Thank you so much, Anayan. Lovely to hear your question. Thank you. Okay, Niharika, do you want to ask anything? Yes. Yes. Yes, Siri. Om Shanti Bhaiji. I want to tell that can you share your experience when you meet Baba and take drishti from Baba? How you feel? I think he already did that. But thank you, Niharika. Maybe I can, you know, I had the fortune to meet Baba many times. And, you know, in essence, Niharika, sister, that I found that Baba always would see you with such high vision. And everyone feels so much elevated after meeting Baba. So you don't have to meet Baba personally. You can have that feeling every day, every hour. If you feel close to Baba, you feel Baba's drishti on you, you can feel how Baba loves you so deeply. So anything else in life is secondary to that. So if friends or others are not nice to you, you won't feel so affected. But you know, once, I'll tell you one little story. Once Baba was actually meeting in the meditation hall in Pandav Bhavan, and we'd finished the meeting and they were feeding Borg to Baba. And they packed up the Borg, and Baba would take leave by giving drishti to Daddy Prakashmani nearby, and then Baba would fly off. And Baba was giving drishti, then he stopped and he asked Muniben for a tin of toli. And then Baba called me up and he gave me a whole tin of toli. And he said, share it with your friends. And really, Baba knows how to fill the heart with so much love. So really, I had so many wonderful experiences
with personal meetings with Baba, so many. It was a very, very special time. But in saying that, as I said, you can have the same feeling now. You can meet Baba in the subtle region and have those feelings of love and belonging. So thank you for your lovely question. Thank you, Okay. Bhaiji. Thank you so much, Charlie Bhai. I think the kids are now becoming very eager for the next part of this session, which is the quiz. Yes, I'm sure they are. Well, Shivika Ben, thank you so much. It's really, you. kids, lovely to meet you. You're very, very special and so lucky. I wonder whether you realize how lucky you are to know Yes, Baba at your age. You are the luckiest children in the world. So these kids are fantastic. very smart, and I always feel that they have got a great future ahead. So sometimes I even see, dadis and dadas inside these small bodies. Yes. I think there's someone who wants to ask a question, who's very eager. Via Yeah. Bhai, is it? Who is it? Via. Yes, Veer. Yes. When I do meditation, Huh? I can't concentrate in that. I can't concentrate. Okay, when you do meditation, you're not able to concentrate. Yes. Okay, we'll tell you the process again. Okay, we'll tell you how to concentrate. I think a lot of kids are asking the same question again and again, but we'll tell you the process of concentration. Okay, so we'll move ahead with the quiz now, and we are so thankful. Say thanks to Charlie Bhai that he took so much of his time and joined with us today for this class. Thank you, Thank you. kids. Thank you so much. Thank It's you for lovely to meet sharing. you. Yeah. And thank you, Shivika Ben. Really lovely to be with Thank you. you for Really sharing your appreciate. experiences. Thank you, Bhaiji. Okay. If you come to Shantivan, please come and say hello. I'd love to meet you. Yes. Charlie Bhai is right now in Pandav Bhavan Thank you, Bhaiji. in India, Madhuban. So he's very much approachable. If anyone has come to Madhuban now, he or she can go and meet Charlie Bhai in Pandav Bhavan. Okay. Thank you so much, everyone. Bye. Enjoy the quiz. Thank you. Thank you, Bye, brother. Shadi bhai. Bye, everyone. All right. Okay, so it's time now for the quiz. And after the quiz, what are we going to do? We'll be seeing the results of the clay modeling competition. All right. So the link is, who's speaking? Buran Bhai, can you please share the link? हाँ एक मिनट शेयर कर रहा हूँ. Okay, the link has come for the quiz. आप स्क्रीन शेयर कर देंगे? नहीं करेंगे. सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आपके चैट बॉक्स में क्विज की लिंक आई है. मैंने एक बार और पेस्ट कर ली है. तो चैट बॉक्स में जो क्विज की लिंक है उसको क्लिक कीजिए, उसमें अपना नेम और सिटी डालिए और वेट कीजिए. हम स्टार्ट करेंगे अभी.
और नेक्स्ट वीक के लिए जो टास्क है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए, वो है डांस कॉन्टेस्ट का, और शिविका बहन उसके बारे में बताएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। 69 बच्चे ज्वाइन हो गए 84 में से। सभी बच्चे क्लिक करो, जल्दी जल्दी क्लिक कर लो क्विज की लिंक पे। ओके, हम आज कर रहे हैं। कुछ हो ना हो, झंडे जरूर सबको याद हो गए होंगे अभी तक, सारे देश के, है ना राजवीर? फिर भी देखते हैं कौन सब फुल मार्क्स लेके आता है। अच्छा, ये फ्लैग कौन सा है? आइडेंटिफाई द फ्लैग। कनाडा, किरीबाटी, नॉर्वे या अंगोला? राइट आंसर है कनाडा। अभी इंडिया कनाडा का बहुत न्यूज में आ रहा है। 65 बच्चों ने राइट आंसर्स दिए हैं। Who designed the current national flag of India? Who designed the national flag? Guru Sukumar Mitra, Sachindra Prasad Bose, Sarojini Naidu, Pingali Venkaiah। भारत का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया है? आंसर है पिंगली वेंकैया, और 38 बच्चों ने राइट आंसर्स दिए हैं। Next question. Identify this flag. Is it South Africa, Honduras, Zimbabwe या Laos? Laos या Lagos? लाओस भी होता है। आंसर है साउथ अफ्रीका। 45 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। अभी इस फ्लैग को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस फ्लैग। ब्राजील, इंडोनेशिया, बोलिविया, जर्मनी। अभी अपने आप को म्यूट कर देना। राइट आंसर है ब्राजील, और 63 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। अब ये धारियां पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस फ्लैग। इसमें बस दो ऊपर की जो व्हाइट पट्टी है ना, वो इमेज में दिख रही है, वो एक्चुअली है नहीं। तो ये फ्लैग नकली है। नकली नहीं, वो हर एक में दो व्हाइट डाल देता है ना ऊपर नीचे दिखने को इमेज में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिजाइन में ऐसा हो जाता है। राइट आंसर है थाईलैंड, और 42 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। आइडेंटिफाई ऊपर नीचे दिखता है जो। आइडेंटिफाई दिस फ्लैग। रवांडा, कतार, पेरू या पोलैंड? फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे रिसेंटली। राइट आंसर है कतर। What place is this flag associated with? ये फ्लैग कौन सी जगह से जुड़ा हुआ है? Associated मतलब कहाँ का फ्लैग है, वही ना? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। एसोसिएट होने का मतलब क्या होता है? राइट आंसर है नॉर्वे। 26 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। अभी इस फ्लैग को पहचानिए। इज इट ओमान, इराक, सऊदी अरेबिया या अफगानिस्तान? राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। 44 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं।
What place is this flag associated with? Is it Mexico, Turkey, Yemen, या Latvia? राइट आंसर है मैक्सिको। ये कहाँ इसको का तो सब फ्लैग है? पहचानते होंगे। वियतनाम, नामीबिया, बांग्लादेश या श्रीलंका? इसमें रावण बना होता है तो तुरंत पहचान लेते। रावण नहीं है, लायन। राइट आंसर है श्रीलंका। Name the country: Afghanistan, Armenia, Iran, Brunei. राइट आंसर है अफगानिस्तान। 45 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। Identify this flag. Is it Namibia, Russia, Ukraine या Poland? इसमें भी ऊपर और नीचे की, एकदम ऊपर और नीचे की वाइट पट्टी नहीं है। राइट आंसर है रशिया। 45 बच्चों ने राइट आंसर्स दिए। Now identify this flag. Is this Italy, Argentina, Spain या Finland? फुटबॉल खेला जाता है बहुत यहाँ पे। और अच्छे क्लू दो बच्चों को। फुटबॉल सब जगह खेला जाता है ना, स्पेन भी खेलता है, इटली भी खेलता है, अर्जेंटीना है ये। Identify this flag. ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। Is it UNEP's World Health Organization, UNESCO या United Nations Organization? राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 25 बच्चों ने ही राइट आंसर दिए। इतना सिंपल क्वेश्चन था। Which country flag has 5 stars? कौन सा कंट्री फ्लैग है जिसमें 5 सितारे हैं? चाइना, इजराइल, मलेशिया या यूएसए? राइट आंसर है चाइना। उसमें एक बड़ा स्टार होता है और 4 साइड साथ में उसके स्टार्स होते हैं। Which country flag has white rectangle and red circle in the middle? White rectangle में red circle कौन से फ्लैग में होता है? जापान, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड या वियतनाम? राइट आंसर है जापान। What is the most common color on world's flag? सारी दुनिया के जो फ्लैग्स हैं उसमें सबसे कॉमन कलर कौन सा है? ब्लैक, ब्लू, रेड या येलो? राइट आंसर है रेड। लाल कलर सबसे ज्यादा दुनिया में यूज जो होता हमारे फ्लैग में नहीं है। आइडेंटिफाई द फ्लैग। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और जॉर्जिया। ये कौन से देश का फ्लावर है? ये सॉरी फ्लैग है। है। हॉस्पिटल का फ्लैग मिलता है। मुझे तो हॉस्पिटल का ही लगा पहले, पर ये उल्टा है, हॉस्पिटल का रेड होता है।
राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। What country does this flag belong to? France, Italy, Portugal या Netherlands? राइट आंसर है पोर्तुगल। Which country does this flag belong to? Peru, Colombia, Guatemala या Chile? राइट आंसर है कोलंबिया। अभी इसको पहचानो, ये कौन से देश का है? क्यूबा, ग्वाटेमाला, मेक्सिको या चिली? राइट आंसर है क्यूबा। ये कौन से देश का फ्लैग है? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, स्पेन या बोलिविया? राइट आंसर है स्पेन। Which country does this flag belong to? Myanmar, Vietnam, Laos या भूटान? देखते हैं कितने बच्चों को ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। जीविका बहन बताइए कौन सा आंसर है इसका? पता नहीं मुझे। भूटान। Which country does this flag belong to? Namibia, Nigeria, Nepal या Niger? खुशी तो होगी, खुशी को तो पता होगा कौन सी है। अच्छा, नेपाल है। राइट आंसर है नेपाल। अभी ये फ्लैग पहचानिए। निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका, पोर्टो रिको। इसका आंसर जिसने राइट दिया उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। राइट आंसर है कोस्टा रिका। 40 बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं। Which color remains at the top while hosting the national flag of India? भारत का फ्लैग जब हम फहराते हैं तो कौन सा कलर टॉप पे होता है? ग्रीन, ब्लू, सैफरन या वाइट? अगर इसका किसी ने गलत आंसर दिया तो डबल ट्रिपल माइनस हो जाएंगे। ओके, राइट आंसर है सैफरन और 11 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, बाकी 58 ने सही है। वो झंडा उल्टा देखते हैं ऐसे। वो मेरी तरह कलर ब्लाइंड होंगे। ओके, इसको Okay. ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, मैच कीजिए कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है, और ड्रैग एंड ड्रॉप जब सारे आप पांचों कर दें उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ओके, टाइम लिमिटेड है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही कंफ्यूज होने वाले हैं। नहीं पता है सारा? थोड़ा पता, थोड़ा नहीं पता है। राजवीर को पता होगा। अथर्व को भी पता होगा। अथर्व, तुमको पता है ना?
दिविश, दिविश को पता है? दिविश ने देखो हैंड रेस कर दी। यस, उसको पता मैंने है। टाइमर एक्सटेंड किया है, जितने अभी बचे हैं वो भी कर लो जल्दी से, जल्दी करो। 10, 9, 8, 7, युतिका को पता है? 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी मैच द फॉलोइंग में मैं नरेट नहीं कर सकता कौन सा किसका था। जो क्रॉस, अभी छोड़ो, इसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा। इमेज है, इसको भी मैच करो। ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको मैच करो। टर्की, पाकिस्तान, अल्जीरिया, टूनिसिया। सब चांद और तारे हैं सभी झंडों में। चांद तारे। तुर्की है, पाकिस्तान है, अल्जीरिया है, टूनिशिया है। जल्दी जल्दी करो सभी। एट है, 10 सेकंड बचा है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम स्टॉप। और कईयों ने, पाकिस्तान का सभी ने ज्यादातर राइट दिया है, बाकी दूसरे इसमें थोड़े कम दिए हैं। ओके, टाइम्स अप। That's it. Your quiz is done. Anything else? ओके, आपके साथ लीडर बोर्ड शेयर करते हैं। आज के विनर्स कौन कौन है? दिल थाम के बैठे सभी। ओहो, वाव, राजवीर राजवीर देखो 7वें आसमान पे है। कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट नंबर पे है आज राजवीर कोरे फ्रॉम मुंबई। Thank you. सेकंड नंबर पे है युतिका फ्रॉम दुबई। और थर्ड नंबर पे है दिविश सिंगला। Thank you, भैया। फोर्थ पे है अनयान फ्रॉम नवी मुंबई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। तनिष्का भी बहुत खुश हो रही है राजवीर आया तो। फिफ्थ नंबर पे है निर्भीक फ्रॉम दिल्ली। कंग्रेचुलेशंस निर्भीक। देन सिक्स नंबर पे है अंतरा फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सेवेंथ पे है इशिता। इशिता, आप कहाँ से हो? इशिता कौन है? उस नाम से नहीं जुड़े हैं, अगर है तो हैंड रेस करो तो मैं अनम्यूट करता हूँ। इशू नाम से है। इशू। थैंक यू दीदी। नाम ओके। सेम रखो, जो इधर रखते हो जो इधर रखते हो, दोनों सेम रखने का। इशिता, आप मम्मी के नाम से जुड़े हो? नो दीदी। ये आपका नाम है इशिता? यस दीदी। ये आप गर्ल हो कि बॉय हो? सिस्टर गर्ल, दीदी गर्ल। अच्छा, आपके बालों से ऐसा लगता है बॉय है। सॉरी। ओके, एट्थ नंबर पे है सिस्टर दीदी, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। ओके, यू आर फ्रॉम गुड़गांव। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइम से नहीं भूलेंगे। ओके, एट्थ नंबर पे है आर्यमान फ्रॉम पुणे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। नाइन्थ पे है पवनी। अवनी भी अपना हैंड रेस कर दो अगर हो तो। ओके,
10 है वीर। 10 नंबर पे है वीर फ्रॉम प्रयागराज, फ्रॉम वीर। ओम शांति। Okay, congratulations to all 10 of you and the rest of the others also who made the attempt. Thank you so much. और मेरे ऊपर एक हाथ आ रहा है, वो मेरा ही है। ओके ओके, अभी हम लोग ये सो नाइसली ऑल ऑफ यू स्माइलिंग। मैं कोई जोक्स क्रैक करूं क्या? आप सबकी स्माइल देखो कितनी अच्छी अच्छी लगती है स्क्रीन पे। दिखाना आप सब स्माइल करके, स्क्रीन पे ऐसे खड़े होके स्माइल करना सभी। ही अनुराग भी स्माइल कर रहा है, कुछ बोलना अनुराग को। क्ले क्राफ्टिंग का वो नहीं दिखाइएगा, लीडर बोर्ड। नहीं, Clay हम नहीं crafting। दिखाएंगे। क्ले क्राफ्टिंग का लीडर बोर्ड नहीं दिखाएंगे हम तुम्हें। वाह जी वाह। आप सबने मोदक खाए क्या गणपति के उत्सव में? किसने मोदक खाए जरा हाथ खड़ा करना। ओके, तो ये जो है हम लोग अभी एंजल ग्रुप्स के जो हमारे पास में एंट्रीज आई थी उसका है। आस्था शिव प्रसाद अकोट से, अनय माथुर अलीगढ़ से। सबको विजिबल है ना? वाह, ये क्या साइकिल बनाई है, इतनी क्यूट है। साइकिल बनाई है। सो नाइस। ये इसको आराध्या बाल मुकुंद बिंबल के पुणे से, आर्यमान जगता पुणे से। लवली, आर्यमान ने बनाया, बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा बनाया है। हावड़ा से। ये आत्मजा ने ऐसा लगता है हल्दी से बनाया है। और ये जो है ईवा प्रजापति ऑस्ट्रेलिया से। और ये ईशान वट्टीपल्ली बेंगलुरु से। इनका माउस कितना छोटा सा मस्त लग रहा है। हाँ, कितना क्यूट है वो, मिठाई जैसा लग रहा है वो। और जसरूप खरड़ से। जसरूप ये क्या बनाया है? जसरूप सो स्वीट। तुम्हारी तो फोटोज में तुम ही गणपति लग रहे हो हमको। जसरूप ने क्या बनाया? फ्लावर बनाया है, फूल बनाया है। बताएगा जसरूप है तो। ओके, जित्या ने क्या बनाया है? वाओ, जित्या ने क्या बनाया? घास बनाई है। जितिया क्या बनाया आपने? जित्या ने हमारे लिए एक होमवर्क दिया है हमें कि हम खुद ही ड्रॉ बना ले खुद। जितिया बताओ क्या बनाया आपने? जित्या चली गई। मैं तो सही पर बोल नहीं रही है। स्क्रीन छोड़ के चली गई है। ठीक है। और ये जोशी परी वाकानेर गुजरात से, उन्होंने पूरा एक किचन सेट बनाया है, थाली बनाई है, खाना बनाया है, सब कुछ बनाया है। इसलिए कि कल रात में तुम बनाए। जलेबी बनाई है। और उसके बाद में है निखिल काठमांडू से, उन्होंने बहुत अच्छा क्ले का पूरा सदुपयोग किया, सब कुछ यूज कर लिया उसमें। डायनासोर। ये रुद्रपुर, उन्होंने गणेशा बनाया है, बहुत प्यारा। पवनी खरड़ से, उन्होंने भी एक गणेशा बनाया है। ये गणेश है, बर्ड है। का नाम नहीं लिखा था, उनकी माता जी का नाम है प्रीति देओल, उन्होंने सरस्वती बनाई है। वाह वाह वाह। एक लोटस और शिव बाबा बनाया है आनंद से। प्रियांशी ने भी कुछ केक जैसा बनाया है। संभव नैनावती बैंकॉक से, उन्होंने भी गणेशा बनाया है। सौम्या पवार मेरठ से बटरफ्लाइज। सुदेशना पाल बर्दवान से सरस्वती देवी बनाई है उन्होंने। और तनीषा कोरे, उन्होंने एक छोटे से गणपति बनाया है पत्ते के ऊपर। तनीषा, आपने बनाया? यस। यस, चलो अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। ये विभोर ने बनाया है, जो अर्थ क्रस्ट दिखाई है, अर्थ के अंदर कैसा इंटीरियर होता है वो उन्होंने दिखाया है। वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल। ये सब था एंजल ग्रुप का। अब हम देखेंगे डायमंड ग्रुप का रिवर्स, और एंजल ग्रुप का ही रिवर्स ऑर्डर में टॉप 20। तो इसमें फिनिशिंग के ऊपर ज्यादा मार्क्स दिए हैं कि क्ले से बनाया बहुत लोगों ने, बट फिनिशिंग किसकी अच्छी है। तो 20 नंबर पे है शिवराज यादव पुणे से। 19 पर है इशिता, उन्होंने एक बहुत आर्टिस्टिक आर्ट वर्क बनाया है।
गुड़गांव से, और प्रियंका है, इशिता अभी तो हम साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और प्रियंका ने ये गणेशा बनाया है पूरा, और आसपास की भी एनवायरनमेंट उसमें बनाया है। ये संस्कार देवगढ़े और सिटी इनका नहीं लिखा, मेंशन किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा गणेशा बनाया है। तेजस्वी है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी भी बना दी है। वेरी स्वीट, सो नाइस। झंडा लेके खड़े हैं। ये और भूमिका ने ये बहुत अच्छे लैग्स बनाए हैं, डॉल सैंडल। सैंडल्स बनाए, वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल। हमने डॉल के सैंडल बनाए। और प्रद्युम्न पवार ने मेरठ में उन्होंने कुछ कैरेक्टर बनाए हैं, देखना पड़ेगा। ये क्या बनाए? धैर्य यार, भी उन्होंने गणेशा बनाया है पूरा हाथ से, और बना के उसका वीडियो भी भेजा है, बहुत अच्छा। वडोदरा से 13 नंबर पे है। 12th पर है आत्मजा, उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई उसको इसमें बनाया है। पहले मतलब लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से फिर बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, वेरी ब्यूटीफुल। और ये अथर जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं, अथर ने उसको परमानेंटली अपने वॉशरूम के क्या कहते हैं, मिरर पे लगाया हुआ है। रुद्र राव, उन्होंने 2-3 चीजें बनाई है, और 10वें नंबर पर है, उन्होंने पूरा सब्जियां भी बनाई है, गणेशा भी बनाए हैं। और अनुराग 9th पे अयोध्या से, उन्होंने एक पैंडा टाइप का कुछ बेर बनाया है, बट इनकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लगी। अद्विता ने जो है फूड आइटम्स बनाए हैं, उनको कलर भी किया है, और इसमें बर्थडे थीम पे इन्होंने किया, अद्विता गाजियाबाद से। और निश्चल शाह, उन्होंने एक 4-5 एनिमल्स बनाए हैं, बड़े क्यूट बनाए हैं। निश्चल हमारे साथ है क्या? निश्चल नहीं है हमारे साथ। और दानिशका ने एक्वेटिक और मरीन मरमेड वगैरह बनाई है। दानिशका भी हमारे साथ आज नहीं जुड़े हैं। 6 नंबर पर है। 5th पर है अनन्या यादव। अनन्या भी हमारे साथ नहीं जुड़ी है। अनन्या ने बटरफ्लाईज बनाई, नहीं सॉरी, मधुमक्खियां बनाई। वो तो अभी एक है, वो तो बहुत सारा बनाती है हर बार। ये भी उसी का ही है, ये भी उसी का ही है, हम्म, ये भी उसी का ही है। तो अनन्या ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अनन्या 5th नंबर पर है। 4th पर है देवांगी। देवांगी ने बहुत प्यारा, वाह देवांगी, वेरी नाइस। आपने ये टेडी बेयर का घर बनाया है, एंड बनाया टेडी है। बेयर भी बनाया है। और 3rd पर है मानस आदिपुर से, उन्होंने बहुत फिनिशिंग में शिवलिंग बनाया है। और लवली। 2nd पर है प्रांशी जहांगीर, उन्होंने बहुत सारी छोटी 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 चीजें बनाई है। और 1st पे है उज्जवल देव, उन्होंने 3-4 चीजें बनाई हैं। एक ये शंकर और नंदी बनाए हैं, जो बड़ा आर्टिस्टिक वे में उसको ये दिया है। और वेरी एक लवली। है, तो उज्जवल हमारे साथ है क्या? उज्जवल भी नहीं है। ओके। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस उज्जवल, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रांशी। प्रांशी अभी तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। प्रांशी है क्या हमारे साथ? प्रांशी है ना, वो हैंड रेस किया हुआ है उसने। ओके, आप थोड़ा म्यूट कर देना कोई है तो। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अभी हम लोग हेलो। ओम शांति। जो बहुत अच्छा। जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने जो बनाया वो हम देखेंगे। तो अदिति ने ये बनाया है आकृति ग्वालियर से, उन्होंने हाथ के साथ में बहुत अच्छा गणेशा बनाया है। चैत्रिक अंबाला से, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल क्लाउड्स और रेनबो और थीम पे बहुत प्यारा बनाया है। कनिष्का अहमदाबाद से,
और ये कविश थाने से है। शिवांशी पुरोहित, उन्होंने आप पीछे का मत दिखे, बट आगे उन्होंने पूरा क्ले से सांता क्लॉज और ये सब बनाया है। पीछे तो उनके टॉयज हैं। और राजयोगी किड्स विंटर कार्निवल उसका थीम पर बनाया है। तो शिवांशी ने ये बनाया है। और इसके बाद में श्रेया, उन्होंने गणेशा बनाया है। तनुजा, उन्होंने भी गणेशा बनाया है श्री रामपुर से। और इसके अलावा जो टॉप 20 है, तो ये है शिवा बेंगलुरु से 20 नंबर पर, अनुराग है 19 नंबर पर, बटरफ्लाई बनाया है। इशिका, उन्होंने 2 गणेशा बनाए हैं बहुत प्यारे। और तिथि ने एक हैंगिंग डेकोरेटिव बनाया है। आदित्य ने गणेशा बनाया है, पीछे का बैकग्राउंड भी बनाया है, बहुत प्यारा सा। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, फोटोग्राफी भी अच्छी है। हिमांशी ने ये देवी सरस्वती बनाए हैं और बहुत कुछ बनाया है साथ साथ। हिमांशी 15 नंबर पे है। 14 पर है शाकांबरी सोलापुर से, उन्होंने गणेशा जी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। तिथि ने एक और चीज बनाई है, उनका 2 बार नाम आ गया है, कोई बात नहीं, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। और 12 पर है मानवी जयपुर से, उन्होंने भी छोटा सा गणेशा और आसपास की चीजें बहुत अच्छी बनाई है डेकोरेटिव। और ये पीयूष जहांगीर उन्होंने बनाया है। ये बैक साइड से ऐसा दिखता है और फ्रंट से जो है उनके ऊपर ये सब किया है, बहुत प्यारा बनाया है, क्रिएटिव है। और 10वें नंबर पे है अदिति लखनऊ से। और 9th पर है युतिका, उन्होंने भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। और 8 पर है श्रेयस महाजन मोहाली से, उन्होंने बहुत अच्छे पॉट होल्डर्स बनाए हैं। श्रेयस हमारे साथ है क्या? श्रेयस नहीं है। और 7th पर है कौशिकी बेंगलुरु से, उन्होंने बहुत प्यारा इनका वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने इसमें जो है जो अगरबत्ती सेंट्स आती है जिसका क्लाउड पूरा गिरता है, तो वो उस टाइप से बनाया कि क्लाउड भी इसमें फॉर्म होता है, बहुत प्यारा। थैंक यू भाई जी, होम शांति। शांति। और वरुण प्रजापति है 6th पर, बहुत आर्टिस्टिक, उन्होंने ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा मोहनजोदारो में बनाते थे ना, वैसा ही कुछ बना दिया है। ओके, 5th पर है निष्कर्ष, उन्होंने पूरा एक निष्कर्ष ने एक पूरा होम और उसके आसपास की चीजें बनाई हैं, बैतूल से हैं। निष्कर्ष हमारे साथ है क्या? निष्कर्ष भी नहीं है हमारे साथ। और 4th पर है श्वेता, श्वेता भी नहीं है, बट उन्होंने गणेशा और उनको जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो सब चीज बहुत अच्छे से बनाया है। और 3rd पर है गायत्री सुरेश बुरुनई से, उन्होंने गणेशा बनाया है। गायत्री हमारे साथ है? गायत्री थी तो सही, अभी चली गई। ओके। और 2nd पर है आराध्य ओम प्रकाश तोलमरे आकोट से, उन्होंने बहुत प्यारा पंछी और ये सब बनाया है। आराध्या है क्या? आराध्या भी नहीं है। और 1st पे है ध्रुव अयंगर, ध्रुव हमारे साथ है? ध्रुव भी नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत प्यारा ये आउल्स बनाए हैं, 2 आउल्स बनाए हैं जो ट्री के अंदर है, बहुत फिनिशिंग के साथ बनाए, बहुत अच्छे बनाए हैं। तो आप सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आप सब इतना एफर्ट करके बनाते हो। वैसे सभी विनर्स हो, क्योंकि इतना एफर्ट कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ बनाते हो, बहुत प्यारे लगते हैं सब। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि किसको हम क्या रैंकिंग दें, है ना? लेकिन क्या, मतलब भले नंबर लगे ना लगे, बट आप सभी को तो सीखने को मिलता है और आप लोगों की क्रिएटिविटी हमेशा काम आती है।
है ना, ये क्रिएटिविटी सभी के लिए बहुत काम आएगी आगे जाकर के। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऐसे टास्क जरूर लेने चाहिए, एफर्ट जरूर करना चाहिए। तानिका ने राइट, भी बनाया कुछ? नेक्स्ट टाइम से हम एक काम ऐसा करेंगे, एक ऐसा टास्क देंगे, लड़कियों को देंगे वो टास्क जो लड़के करते हैं, लड़कों को वो टास्क देंगे जो लड़कियां करती हैं, है ना। तो देखते हैं कि वो टास्क कौन कितना कंप्लीट कर पाता है ना। अभी तो दीदी डांस का है, आपको दो वीक का टाइम है डांस कॉन्टेस्ट, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो नवरात्रि में डांस होता है, गरबा होता है और बहुत कुछ होता है। तो अभी डांस का हम लोग, आप वीडियोस बना के टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम में करेंगे तो पूरा वीडियो आता है, व्हाट्सएप में लिमिटेशन होती है 1 मिनट के बाद में, फिर वो कट जाता है। तो आपको हम पोस्टर शेयर करेंगे। और बॉयज को भी हम लोग चाहते हैं कि बॉयज भी डांस में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, बॉयज नहीं करते। दीदी हाँ जी। हाँ जी, बोलिए अनुराग एक जी। जोक सुनाइए। जोक सुनाऊं? जोक सुनाओ। हाँ दीदी। एक लड़का था, उसका नाम था अनुराग। हाँ, चलो करें जोक आगे। हाँ भैया। दीदी सुनाएंगे, दीदी सुनाएंगे। मैं क्या जोक सुनाऊं? क्या जोक पहले सुनाऊं? जोक याद नहीं आते, पहले से प्रिपेयर एकदम करते से हैं तो याद याद नहीं आता है। आता है जोक। चलो अगली बार हम जोक बनाएंगे, एक कंपटीशन ही रखेंगे, कॉन्टेस्ट, सब जोक बना के उसमें डालो, तो जो अच्छा, जिसका जोक अच्छा होगा उसको फर्स्ट प्राइज देंगे। ठीक ठीक है अनुराग, तुम्हारा डांस जरूर देखेंगे हम, ठीक है। ठीक है भाई। तेरे भाई के साथ बनाना, ठीक। ठीक है। अनुराग का वो मेरे को मोनो एक्टिंग अच्छा लगता है, उसने क्या बना था, किसान बना था, सोल्जर बना था? सोल्जर। सोल्जर बना था। एक बार कृष्णा। एक बार कृष्णा बनाया था, अच्छा है, करते रहो ऐसे। ठीक है, इसमें शर्माने का नहीं, सभी डांस का एक अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ और डालो, और पर सब डिवोशनल होना चाहिए। ओके।